अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लेकिन आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूं शगुफ्तारी कैश सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइज़ हम जो है वो आज बॉक्सर वेबसाइट के पार्ट 2 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो स्टे कनेक्ट विद मी, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना, शेयर करना और गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइज़ हम यहाँ पर जो है वो एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं अबाउट का। Now we are going to create here the about section like this one. So यहाँ पर सबसे पहले हम एक सेक्शन बना लेते हैं। सेक्शन के अंदर we are going to create here the class का नेम हम about रख लेते हैं, about section रख लेते हैं। So we are going to write it here the about section, and after that we are going to implement here again another class is a layout padding. हमने अभी इसको क्रिएट नहीं किया, हम इसकी जो है वो पैडिंग की इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे सेम लाइक दैट। इस तरह से पहली वेबसाइट हमने क्रिएट करी है सेम वैसे ही है। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द container flute. So after that we are going to create another the row class. तो यहाँ पर मैं एक और क्लास कॉलम मिड 10 दे रही हूँ, और इसी के साथ गाइस मैं मार्जिन लेफ्ट ऑटो कर देती हूँ, एंड देन पैडिंग राइट इज 0. Move on the next. Here is about container. So if you required guys any source code तो आप लाजमी बता सकते हैं. Create here the row. After that we are going to create another column large 3, column medium 5. After that we are going to implement here the detail box. So inside this we are going to implement here the heading container. So we are going to create here another class. इसी के साथ guys we are going to create h2. तो यहाँ पर हम about लिख देते हैं. ओके, about us. इसी के साथ गाइस हम h2 के बाद एक div के बाहर आएंगे and then create here the note the 2 divs. I just back from one div, it's a paragraph. तो फिलहाल हम लॉरम एप्सिम का पैराग्राफ ले लेते हैं. इसी के साथ इस पैराग्राफ के बाद we are going to create here the horizontal ruler. Okay, after that we are going to take here the anchor tag, और anchor tag को फिलहाल हम अभी एम्प्टी करेंगे और यहाँ पर हम एक रीड मोड का बटन प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है जी, लाइक इन दिस वे, like this one. So here is the read. So here is close here the section. अब इसी के साथ साथ guys we are going to take here another is a class section. तो यहाँ पर मैं एक इस मीन दैट प्रोवाइड here some schedules. So यहाँ पर मैं एक नेक्स्ट जो सेक्शन है वो क्लास सेक्शन का क्रिएट करूँगी. फिलहाल we are going to create here the final look. So move on the CSS. सो गाइस यहाँ पर हम सबसे पहले लेआउट की सेटिंग प्रोवाइड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम लेआउट पैडिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे.
सो टॉप पे जाएँ तो आप बॉटम में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल है तो इसलिए मैं टॉप पर आ गई. सो पैडिंग टॉप इज़ 120 px. इसी के साथ साथ गाइस मूव ऑन द नेक्स्ट. Here is padding bottom 120 px. Okay, move on the next. इसी के साथ साथ हम आ जाते हैं लेआउट पैडिंग 2 पे. ओके मैं बना लेती हूँ फ़िलहाल, तो उसको डिडक्ट कर लेगी जब हम आगे जाके लेआउट पैडिंग 2 को गेट करेंगे. तो सिंपल पैडिंग रखते हैं हम यहाँ पर 45 px and then 0. Move on the next. Here is another layout padding 2, जिसमें हम बॉटम क्रिएट कर लेंगे. तो पहले मैं टॉप क्रिएट कर लेती हूँ, क्योंकि ये बेसिक सेटिंग्स है जो कि हमने पहले भी की हैं. जिन्होंने पहला लेक्चर मेरा देखा है, they have an idea about, they are the mandatory. इसी के साथ साथ लेआउट पैडिंग 2 बॉटम padding bottom is 45 px. So layout padding, its top, let's implement here the padding top is 120 px. After that we are going to implement here the another. Here is the layout padding. अब हम बॉटम पे implement कर देते हैं. So हमने टॉप पे 1 and 2 दोनों को implement कर दिया. So padding bottom is 120 px. Okay. So move here the heading container class. सो इम्प्लीमेंट हेयर. सबसे पहले डिस्प्ले सबको पता होगा, डिस्प्ले वेबकिट बॉक्स. इसी के साथ साथ डिस्प्ले ms flags box, and again display is flags. After that WebKit box orient. Here is the vertical WebKit box direction. Here is the normal. MS flags direction. Again we are going to implement here the column. Flags direction we are going to take here again column. WebKit box align is start. MS flags align start, and then align item flags start. So heading container and then h2. So here is the font weighted is bold. After that display is WebKit box, and then display is MS flags. After that display is flags. WebKit box align is centered. Again MS flags align is centered. And after that align item is centered.
Move on the next is a text transform. We'll get here the uppercase for heading. इसी के साथ साथ guys we are going to take here the color of font. So यहाँ पर हम अपना कलर कोड गेट कर लेते हैं. So here is our color for the font. Okay. So ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया था जिसको हमें राइट डाउन करना कंपलसरी था. सो अब हम गए सिंपल, ये सेम मेथड वैसे ही है जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इम्प्लीमेंट किया था. सो डोंट बी वरी अबाउट दैट कि अगर ये क्लैरिफाई नहीं हो रहा दैन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. सो मूव ऑन द नेक्स्ट इज़ अबाउट सेक्शन. सो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कमेंट क्लियर करते हैं बल्कि हमने यहाँ दे दिया. अब सिंपल यहाँ पर लिख दे देंगे. हम अब जो बात कर रहे हैं इट्स डिपेंड ऑन दी अबाउट. मैं इसका प्रीव्यू साथ साथ आपके साथ डिस्प्ले करती रहूँगी. सो नाउ यू कैन सी अबाउट हमारे पास आ चुका है. हमने पैडिंग इम्प्लीमेंट कर दी थी. अब मूव ऑन दी नेक्स्ट. सो अबाउट सेक्शन को क्लैरिफाई करते हैं. सबसे पहले हम आते हैं अबाउट सेक्शन के साइड पर. Implement here the about section class. Sorry, we are going to back on the CSS, not the HTML. So here is the about section. So के section में हम I डालना भूल गए, चलिए हम डाल देते हैं. So we are going to edit here. Okay, fine. So move on the next. So we are going to implement here the font color is white. Okay, इसी के साथ move on the next. Next class is about section and then heading container h2. Again implement here the font color is white. About section and then about container. Padding is 45px. बैकग्राउंड इमेज इम्प्लीमेंट कर देते हैं. हम यहाँ पर URL गेट कर लेंगे. पहले सजेस्ट कर लेते हैं क्राइटेरिया. दैन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर बैकग्राउंड साइज इट्स अ कवर. About container and then again detail box. So again implement here the display is WebKit box. Again display is MS flags and again display is flags box. After that implement here the WebKit box orient. It's a vertical and again WebKit box direction. Here is again the normal MS flags direction is column. And last on the list we are going to implement here the flags direction as well as column. Okay, move on the next. Here is the about section. So move on the next. We are going to implement here about container and then we are going to take it here detail box, implement here, and then I think we are take it here the paragraph. Okay, so we are going to take here the margin top is 25px. Okay, move on the next. And then here is the about section, then about container, and then detail box, then HR for horizontal ruler. So यहाँ पर guys we are going to take some settings, margin then 0, and implement here the auto.
After that we're going to take here the border is none. So implement here the width is 1.5 px and height we are going to implement is 125 px. So background color we are going to take here the white. नाउ गाइस यहाँ पर प्रीव्यू आप देख सकते हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने ऑब्वियसली फ़ॉन्ट का जो कलर है वो वाइट किया है और असल में हमें पिक्चर लगानी थी तो हम पिक्चर का डायरेक्ट लिंक पहले यहाँ पर गेट कर लेते हैं. सो यहाँ पर आता है यूआरएल के ऊपर एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड सम इमेजेस. सो यहाँ पर मुझे एक पिक्चर एचडी के अंदर ऐड करनी है. कोशिश कीजिएगा कि पिक्चर जो है वो आपकी लैंडस्केप फॉर्मेट के अंदर हो. सो नाउ वी आर गोइंग टू शेयर द रिजल्ट. इट्स लुक लाइक दैट. अब यहाँ पर अबाउट और टैग्स भी आपको यहाँ दिखना है. यहाँ पर आपको बटन भी दिख रहा होगा. ठीक है गाइस. सो फर्दर मोर वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर अनदर इफेक्ट. तो अब आगे बढ़ते हैं. सो मूव ऑन द नेक्स्ट. हियर इज अनदर so about section. After that here the about container and then detail box and here is the anchor tag. so यहाँ पर आके डिस्प्ले को कर लेते हैं align block. so we are going to take here the padding. It's 8 px then 35 px. After that we are going to implement here the background color. Here is we are going to implement the black. After that border implement कर देते हैं 1 px then solid and then transparent. so इसी के साथ साथ implement here the border radius 35 px. so implement here the font color. here is white क्योंकि अभी तक हमने white color ही रखा है. margin हमें रखने हैं 35 px. auto 0 and again auto. move on the next. here is the WebKit. WebKit box shadow. so here is the WebKit. मैं इनफैक्ट इसको लिख देती हूँ. sorry I just forgot the spelling. WebKit box shadow. so we implement here again 0 35 px 0 and then RGBA. This means that you can implement here some color combination. so यहाँ पर मैं ऐसा कलर कोड implement कर देती हूँ. first one is 174 30 5 then 0.7. okay. so move on the next property. here is so we are going to take here the again box shadow simple. so 0 same property जो ऊपर लिखी है आप चाहें तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं. तो आई एम जस्ट गेट दिस control C and then we are going to implement here control V. okay. so move on the next. here is another class is about section and then about container then detail box anchor and then hover. here is the background color. it become white and the font color has become black. so here is class section. सो गाइस यहाँ तक इसका प्रीव्यू चेक करते हैं दैन फिर क्लास सेक्शन को देखते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हमारा ऑब्वियसली
ये अब हमने HR रूलर ले लिया था, इसी के साथ साथ कुछ पिक्चर को हमने अलाइन किया हुआ है साइड, इट्स लुक लाइक दैट। ठीक है गाइस, अब मूव ऑन द नेक्स्ट इज़ अ क्लास सेक्शन। सो फर्दर मोर चलते हैं, इंडेक्स पर आते हैं, देन मेक हियर अनदर सेक्शन। सो क्लास सेक्शन हमने बना लिया था। सो यहाँ पर सबसे पहले गाइस हम क्लास सेक्शन की जो है वो एक क्लास ऐड कर लेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पर सेक्शन नहीं लिया, तो आई एम जस्ट राइट इट हेयर सेक्शन। ओके, इसी के साथ साथ डिफ को नीचे कर दें, दैन हेयर इज़ अ कंटेनर फ्लोट। ओके, इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हेयर द रो, दैन कॉलम मीडियम 10, इसी के साथ साथ कॉलम लार्ज 8 MX ऑटो। मूव ऑन द क्लास कंटेनर। ओके, इसी के साथ इम्प्लीमेंट हेयर द रो, देन कॉलम लार्ज 9, कॉलम मीडियम 10। ओके, इसी के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट, क्योंकि हेडिंग कंटेनर हमने बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, सो वही यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगा सेम प्रोसीजर के साथ। तो ये आसानी रहती है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ऑब्वियसली इट्स नॉट बी रन इन अ प्रॉपर वे। So we are going to take it here and another way. So heading container. Okay, इसी के साथ साथ implement here another, we are going to take here h2. So classes की जो भी videos होंगी ना guys, वो यहाँ पर हम implement कर देंगे। Classes, if you provide here the link, तो आप कोई सा भी link उठा के यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ओवर क्लासेस वीडियोस। ठीक है जी, सो नाउ H2 पर आ जाता है, एंड देन इम्प्लीमेंट हियर अगेन पैराग्राफ। सो यहाँ पर हम लॉरेम का टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। सो अगेन वी आर गोइंग टू बैक हियर डिव। ओके, हम 3 div से बाहर आ जाते हैं, एंड देन हियर अनदर क्लास इज क्लास बॉक्स, कंटेनर। ठीक है जी, इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हियर द, डू यू रिमेंबर हमने ओवल का सीडियन गेट किया था, तो वहाँ पर हम इसको रन करा देंगे। थोड़ा सा ये जो है वो क्राइटेरिया चेक करने का है, तो बहुत ध्यान से लिखिएगा। तो हियर इज द ओवल, carousel 1. Okay, move on the next. Here is the item class. So item के बाद I forget the I. So item के अंदर ही guys we are going to take here the box class. So again implement here the image box. After that we are going to take here the image. तो यहाँ पर मुझे पिक्चर्स ऐड करनी होंगी। We want to provide alter tags, otherwise नहीं, they depend on you. इसी के साथ साथ डिटेल बॉक्स की क्लास इम्प्लीमेंट कर देते हैं। So implement here the button. So image source, alter, and then close here the button. बटन के बाद H2,
boxing, and again implement here the two divs outside from the divs. So implement here another class is a btn box. So here is outside from three divs. So here is create here the item. ओके अगर आप चाहें तो गाइस ऊपर से कॉपी कर सकते हैं सिंपल इसको आइटम से, तो हम यही करते हैं। हम सिंपल आइटम से कॉपी कर लेते हैं इसको। सेम वही प्रोसीजर रहेगा, सेम वही क्लासेस रहेंगी। जहाँ तक ये हाईलाइट हो रहा है वहाँ तक आप इसको कॉपी कर लें। सो वी आर गोइंग टू टेक इट हेयर। सो सिंपल गाइस 3 डिव्स है, अब ऊपर तक इसको कॉपी कर लें आइटम से। ओके, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, ताकि आपको बार बार लेना ना पड़े। एंड देन आप बॉटम पर आए और यहाँ पर यू कैन पेस्ट इट हेयर। ओके, सो वी आर गोइंग टू टेक हेयर द थर्ड वन। ओके, इसके बाद गाइज वी आर गोइंग टू टेक another classes. So move on the next. So यहाँ पर just मुझे एक class implement करनी है। Here is class name is btn box. Enter here. इसी के साथ साथ anchor tag को हम click कर देंगे and then you can see here the see more. ओके, मूव ऑन दी नेक्स्ट। सो नाउ गाइस क्लास का सेक्शन भी यहाँ पर हमारा वाइंड अप हो जाता है और अब सिंपल हम यहाँ पर ब्लॉक सेक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर फ़िलहाल मैं कमेंट पास कर देती हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमें यहाँ पर अब कौन सा सेक्शन डिज़ाइन करना है, ब्लॉक। ठीक है, तो मूव ऑन दी CSS। यहाँ पर हम क्लासेस का सेक्शन ओपन कर देते हैं। classes section, सो गाइज यहाँ पर अगेन अब हम सेक्शन क्लासेस सेक्शन को जो है वो फर्दर मोर कंटिन्यू करते हैं। सो सबसे पहले हम बना लेते हैं क्लास सेक्शन। सो यहाँ पर सबसे पहले वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द फॉन्ट कलर इट्स वाइट and after that we are going to implement here the position is relative। ठीक है, मूव ऑन दी नेक्स्ट। इसी के साथ साथ अब हमने जो कुछ क्लासेस क्रिएट की हैं सो हम आते हैं क्लास सेक्शन पे। सो हियर इज़ द क्लास सेक्शन। इसी के साथ साथ हमने एक रो बनाया था एंड देन इसमें हमने डिव रखा था। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले पोजीशन है इसकी unset। Okay, move on the next। So here is the class section and then class box container। Okay, move on the next। सबसे पहले again guys display आप सबको पता है webkit box, again display ms flags and after that again here the display is flags। After that we are going to implement here the ms flags wrap जो कि है wrap। इसी के साथ साथ move on the flags wrap। again it's wrap। so here is the margin top is 45px, then webkit box pack centered
and after that ms. So here is the ms flex pack, and implement here the centered. So justify content as well as centered. So move on the next is a class section, and then class box container. इसी के साथ साथ implement here the box. So यहाँ पे सबसे पहले guide position is a relative. Move on the next. Here is class section, and then class box container. So implement here the box, and then image box. And then image. Okay, move on. The next is a position is relative. So padding left is 75 px, and implement here the background color is black. Move on the next class section, then class box container, then box, image box, and then image. So यहाँ से मुझे image हटाना पड़ेगा. पहले मैं बॉक्स के बाद मैंने इमेज बॉक्स पे इम्प्लीमेंट किया, अब मुझे यहाँ पर इमेज पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट. Implement here the width of picture is take care the 100%. Okay, next here is the class section, and then again class box container, then box, then image box, and then detail box. So implement here again display. It's WebKit box. Display is ms flags. Display is flags. After that, implement here the WebKit. Box align is and. So ms flags align is and then align item is flags and. On the next, implement here the width is 100%, height as well is 100%. So padding is 55 px, then 0. So implement here the border radius is 10 px. So position is absolute. So top is 0, and then left is 0. So move on the next. Here is the class section, then class box container, then box, then image box. After that, here the detail box. After that, implement here the button, then image. So move here, the width is 20 px. After that, margin left is 5 px. So move here, another class is class section. So class box container, then box, then image box, then detail box,
H2. So here is the margin 0. So text transform is uppercase, color become white, so font weighted is bold. So we are going to implement here the line height as well as 55 pixels. अभी पिक्चर्स इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि अभी प्रीव्यू ऑब्वियसली फॉन्ट कलर हमारा वाइट है तो वो नहीं दिखेगा जब तक हम पिक्चर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे. मार्जिन लेफ्ट इज 15 px. Move on the next. Class is class section. Okay, after that implement here the class box container. Here is the class box container. After that implement here the box. So btn box हमने बनाया था. So again implement here the display. So display ms flags. So display again flags, and then margin top is 30 px. So move on the next. Here is the class section and class box container. Move on the next is the box. देन btn बॉक्स के अंदर हमने एंकर टैग गेट किया था. तो सबसे पहले डिस्प्ले अलाइन ब्लॉक. So after that we are going to implement here the padding is 10 px and then 45 px. Implement here the background color is black. So implement again the border in px, solid and then transparent. So implement here the border radius is 30 px and then implement here the font color is white. So move on the next. Here is a class section. So class box container, then box, then btn box, anchor, implement here the hover. So implement here the background color is white and then implement here the font color is black. So इसी के साथ साथ move on another class is a oval carousel. So class section, and then implement here the oval carousel. Position is unset. अच्छा, यहाँ पर जो मैं क्लासेस कॉल कर रही हूँ गाइस ऑलरेडी वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जो हमने ओवल का कैरोसेल गेट किया है उसके अंदर मौजूद है. बस यहाँ पर कुछ सेटिंग मुझे अपने हिसाब से करनी है तो मैं इनके टैग जो है वो यहाँ पर ओपन कर रही हूँ जिस तरह से हमने पिछली क्लासेस के अंदर किया था. वेबकिट बॉक्स एंड डिस्प्ले हियर अनदर ms flags and again display is flags. Okay, move on the next. WebKit box orient with a vertical. WebKit box direction is a reverse.
So column again reverse. इसी के साथ साथ फ्लैग्स डायरेक्शन को भी आप कॉलम रिवर्स ही कर देंगे. Okay, move on the next. So here is a WebKit. Box align आ जाएगा. Centered. MS flags align is centered. Here is the align item is centered. After that, implement here the padding is 0 and 10 px. Here is the margin top is 55 px. So position is absolute. After that, we are going to take here the top is 50%. तो यहाँ पर मैं इसको 50% गेट कर देती हूँ. इसी के साथ साथ we are going to implement here the right side is 45 px and then the WebKit transform. So here is the WebKit transform. So WebKit transform के लिए translate on the y-axis is -100%. तो सिमिलर रहेगा नीचे वाले के लिए भी सिंपल आपने ट्रांसफॉर्म गेट करना है. सो हेयर इज़ द ट्रांसलेट ऑन y एंड देन -100%. ठीक है जी. सो हेयर इज़ अनदर क्लासेस. मूव ऑन द नेक्स्ट. हेयर इज़ द क्लास सेक्शन. देन हेयर इज़ द ओवल कैरोसेल. ये सेम क्लासेस गाइज मैंने पहले लेक्चर में भी बनाई है. सो यहाँ पर मुझे ओवल नेफ एंड देन ओवल प्रीवियस. ठीक है, अभी प्रीवियस क्लास हमने नहीं बनाई, लेकिन इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट लिंक हमने अटैच किया है ओवल का, उसके अंदर ये अटैच हुई हुई है और मुझे इसको अपने हिसाब से सेट करना है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर कॉल करा रही हूँ. तो क्लास सेक्शन, इसी के साथ अगेन ओवल कैरोसेल एंड ओवल nav एंड देन हियर इज़ द ओवल के साथ में प्रीव्यू हो गया है. प्रीव्यू के बाद हम यहाँ पर प्रीवियस एंड नेक्स्ट. ठीक है जी. नाउ मूव ऑन दी. हियर इज़ द कॉल. सबसे पहले इम्प्लीमेंट हियर द बैकग्राउंड कलर इज़ ब्लैक. आफ्टर दैट ओपेसिटी इज़ 1. इसी के साथ साथ बैकग्राउंड रिपीट इज़ नो रिपीट. And then background position is centered. After that, background size is 12 px. So implement here the border radius is 100%. After that, cut line. Sorry, we are going to implement not the cut line. It's outline. There is none, and then margin 2 px, then 0. So move on the another class is a class section. Then oval carousel. अच्छा सेम भी रहेगा अगर मैं इसको ऊपर से कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सिंपल बस होवर इम्प्लीमेंट करना है. अदरवाइज एवरीथिंग इज सिमिलर. क्लास बिल्कुल सिमिलर ही रहेगी जो कि हमने बनाई है, उसी को ही आपने कॉल करना है. सो मैं यहाँ पर इस क्लास को कॉपी कर लेती हूँ. बार बार लिखने से हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा. सो नाउ सिंपल वी जस्ट ऐड हियर सम होवर इफेक्ट. सो यहाँ पर सूडो क्लास से मैं होवर इम्प्लीमेंट कर देती हूँ. So यहाँ पर implement here the background color is white. Okay guys, move on the another class, the class section, and oval carousel, then oval nav, and then oval preview. So here is the width
75px height as well as 75px, एंड देन इम्प्लीमेंट हेयर द बैकग्राउंड इमेज जो कि हमें नेक्स्ट और प्रीवियस की लेनी है. सो सिंपल हम उसको यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे. सो मैं अभी ही ऐड ऑन कर देती हूँ साथ साथ ही. So here is the preview PNG. Here is okay. So move on the next class. इसी क्लास को we are going to implement here the hover effect, ताकि वो एक ब्लैक एंड वाइट है और एक कलर इमेज है. ठीक है. तो यहाँ पर मैं इसकी विद एंड हाइट को हटा देती हूँ. सिंपल मैं यहाँ पर इसकी ग्रे पिक्चर जो कि हमने सेव करके रखी हुई है उसको हम यहाँ पर कॉल कर, जिस तरह से मैंने पहले भी की है. हैव एन आइडिया. अभी यहाँ पर मुझे इसको होवर करना होगा. सो it just take here the. So move on the next. सेम वही क्लास रहेगी, बस यहाँ पर मुझे नेक्स्ट कर देना पड़ेगा ताकि अब मैं यहाँ पर मैं नेक्स्ट की पिक्चर गेट कर लूँ. सो विद हाइट को हम 50px कर देते हैं. So URL के अंदर we are going to take here the next. Okay, here is another. Implement here the next over. और यहाँ पर गाइस सेम लाइक दैट जो कि हमने नेक्स्ट की पिक्चर की थी इसी में नेक्स्ट ग्रे हमारे पास हम उसको कॉल करा देंगे. ठीक है गाइस. सो मूव ऑन द नेक्स्ट. हियर इज अनदर क्लास, इज अ क्लास सेक्शन. देन oval carousel and oval nav, then oval next. Implement here the width 50%, height is 50px. After that implement here the I think we are going to. So मैंने ऊपर कॉपी कर दी है ऑलरेडी. ओके फाइन. तो यहाँ तक गाइस हमने पिक्चर्स गेट करनी है. सो अब हम अपने प्रीव्यू के साइड पे बढ़ते हैं. जो पिक्चर्स हमारी रह गई थी इन क्लास सेक्शन हम उन पिक्चर्स को यहाँ पर ऐड ऑन करते हैं वन बाय वन. दैन फिर हम फर्दर मोर ब्लॉग को क्रिएट करेंगे. सो गाइस इसका प्रीव्यू देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारा जो क्लास का सेक्शन है वो किस तरीके से प्रीव्यू कर रहा है. सो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द रिबल इन द फाइल फॉर एक्सप्लोरर और इसको रन करा के चेक करते हैं. ओके. रिजल्ट क्योंकि अभी डिस्प्ले नहीं होगा गाइस. देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं आ. रीज़न इज़ दैट क्योंकि हमने कैरोसेल स्लाइडर लिया है. जब तक हम जावास्क्रिप्ट के अंदर सम कोड ऐड नहीं करेंगे जब तक हमारा कैरोसेल काम नहीं करेगा. सो बॉटम पर आते हैं और सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं ताकि हमने जो पिक्चर्स के लिंक लिए हैं वो ऑटोमेटिकली रन हो जाए. सो सबसे पहले हम यहाँ पर बॉटम पे ही आके HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट का पहले कैरोसेल का लिंक प्रोवाइड करते हैं ताकि फर्दर मोर हम इसको आगे गो थ्रू कर सकें. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले यहाँ पर ओवल स्क्रिप्ट पर आ जाते हैं. सो यहाँ पर मैं गाइस ओके ठीक है. यहाँ पर इस क्राइटेरिया के अंदर इसी के नीचे हम यहाँ पर कुछ डेटा कॉल करेंगे, कुछ फंक्शंस क्रिएट करेंगे ताकि अगर आप चाहें तो आप नेक्स्ट पेज के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं या आप जावास्क्रिप्ट की फाइल भी बना सकते हैं. डिपेंड करता है आपके ऊपर. फ़िलहाल हम यही कॉल कर लेते हैं. सो ओवल कैरोसेल आसानी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सारे कैरोसेल्स के नेम वगैरह मेंशन हुए हुए आ जाएंगे. दैट्स वाई मैं इसको इसी के अंदर ही गेट कर लेती हूँ. अच्छा यहाँ से मैं स्क्रिप्ट एंड में नीचे ले जाऊँगी. रीज़न इज़ दैट क्योंकि अभी मुझे आसानी से क्लासेस अवेलेबल हो रही हैं. ठीक है. इसी के साथ साथ ये देखें इस वजह से मैं इसको नीचे लेकर नहीं जा रही. तो here is and then curly bracket and bottom पर लेकर आ जाए. सबसे पहले we are going to write it here the loop through. Okay, now close it here. अगर चाहें तो आप सिंटैक्स कॉपी कर सकते हैं इनकी और फर्दर मोर वेबसाइट के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ चेंजेस करनी है
दैट्स वाई मैं इसको खुद राइट डाउन कर रही हूँ 10 and then here's the nav is true. इसी के साथ साथ nav text here is the next autoplay is true and then autoplay over then pause then true. Okay, move on the next. Here is the responsive. So यहाँ पर गाइस 1 by 1 हमें लूप चलाना है आइटम ज़ीरो पे okay here is we are going to write it here the item 1 so इसी के साथ हम इसको क्लोज कर देंगे इस फंक्शन को move on the next here is the 600 I'll close it here so here is item 2 so item 1 then item 2 इसी के साथ साथ again comma here move on the 1000 so again implement here the item 2 so now we are going to close it here like this one अच्छा इसी के साथ एक और फंक्शन क्रिएट करूँगी मैं ओवल कैरोसेल का सो यहाँ पर चाहे तो इसी को कॉपी कर लें सेम प्रोसीजर है सो इसी को कॉपी कर लेते हैं इसके बाद आ जाइएगा थोड़ी सी चेंजेस करनी है उस चेंजेस को हम देख लेते हैं so here is class 1 okay same like that so लूप को ट्रू ही रखिएगा यहाँ पर मार्जिन को मैं 25 कर देती हूँ इसी के साथ साथ मूव ऑन द नेक्स्ट ऑटो प्लेस ट्रू रिस्पॉन्सिव के अंदर आइटम 1 एंड देन 600 पे अगेन आइटम 2 एंड देन 1000 पे भी आइटम 2 अब सिंपल करना है क्या है जो स्क्रिप्ट का टैग है ना गाइस ऊपर दिस वन उसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स से कट कर लेती हूँ क्योंकि क्लासेस का था इशू मुझे लिखना पड़ती है कॉल करना पड़ती तो मेरा फंक्शन ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो गया ओके सेम लाइक दैट अभी यहाँ पर आपका कैरोसेल जो है वो ऑब्वियसली डर हो गया अब रन कराते हैं इसके कैरोसेल को और देखते हैं कि रिजल्ट क्या है तो कोड प्लेस करने के बाद गई अब यहाँ पर जो मैन प्रोसीजर है वो आपकी पिक्चर्स गेट करना है तो हम सिंपल आते हैं किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएं आप वहाँ से आप पिक्चर गेट कर सकते हैं तो सबसे पहले पिक्चर ले लेते हैं सो हियर इज ऑब्वियस स्लाइडर यहाँ पर हम पहली पिक्चर का लिंक कॉपी कर लेते हैं सो वी आर गोइंग टू टेक हेयर सम बॉक्सर इमेजेस वी आर गोइंग टू टेक फ्रॉम द गूगल सो पहले तो ये कॉपी इमेज कर लेते हैं सॉरी कॉपी इमेज लिंक आप चाहें तो जिस तरह से मैंने डाउनलोड भी किया तो मैंने दोनों प्रोसीजर आपको गाइड कर दी है if you want to get in a link wise तो link wise भी ले लें अदरवाइज आप जो है वो डायरेक्टली पेस्ट करना चाहें तो भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सो मूव ऑन द नेक्स्ट ओके दिस वन यहाँ से कॉपी इमेज लाइन देन बैक ऑन सोर्स को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं सो टेक केयर द थर्ड वन डिपेंड ऑन यू जितने भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं
Okay, here is copy image link. Then here is a third one. So यहाँ पर आ जाते हैं, and then we are working on the fourth one. We are going to take this copy image link, and then यहाँ पर आप चाहे तो गाइस वीडियो के URL प्रोवाइड करना चाहें. इफ़ यू हैव ऑफिशियल पेज तो वहाँ पर आप यूट्यूब के ऑफिशियल जो है वो लिंक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू सी द रिजल्ट. सो उसको रन कराते हैं. सो हमारा जो है क्लासेस का जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया. बस हमारे पास 2 सेक्शन रहेंगे और आज के ट्यूटोरियल्स में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे. सो नाउ यू कैन सी हियर इज़ द इफेक्टिव वे. ओके, नाउ यू कैन सी. अच्छा, आप चाहे तो इनकी लेंथ एंड हाइट एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से. अदरवाइज स्लाइडर इज़ मूविंग, आप क्लियरली गो थ्रू कर सकते हैं. अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइज कि आप जो भी इसकी लिंक्स लेना चाहें तो वो ले सकते हैं. Now guys, move on the block section. और यहाँ पर again we are going to create some section here. So section बना लेते हैं और section के अंदर we are going to create here the class. So क्योंकि block का section है तो इसी class का नाम भी हम block रख देते हैं और identification करने में आसानी रहती है इसलिए. And other class is layout padding हमने already बना के रखी हुई है. इसी के साथ साथ हम आते हैं container float के class पे. I close the caps lock. So here is the container float class. So create here the row. After that we are going to create here the column medium 10. इसी के साथ साथ मैं margin left auto कर देती हूँ like this one. So move on the next. Here is heading container की क्लास बना लेते हैं और इसकी सेटिंग हमने ऑलरेडी प्रोवाइड की भी है. ओके, तो इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू टेक हियर द H2 और H2 के अंदर हम लेटेस्ट ब्लॉग की हेडिंग डाल देते हैं. ओके, सो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द पैराग्राफ और पैराग्राफ में फ़िलहाल हम लॉरम लेते हैं. दैन फिर हम इसको थोड़ा सा एडिट कर देंगे. ठीक है गाइस, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट. इसी के साथ साथ हम जो है वो डिव से बाहर आ जाते हैं. सो वी आर गोइंग टू आउट फ्रॉम द 3 divs. सो डिव्स का बहुत ख्याल रखना, मैंने बहुत दफ़ा बताया है. नाउ क्रिएट हियर अनदर रो क्लास और इसके अंदर अगैन वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द कॉलम empty and then 6. इसी के साथ साथ गए इसमें पैडिंग लेफ़्ट 0 कर देते हैं और नीचे आ जाते हैं. इसी के अंदर हम लोग बॉक्स B1 की क्लास क्रिएट कर लेते हैं. मतलब सिंपल पहले बॉक्स की कर लेती हूँ, फिर इसी के साथ में एक और B1 की क्लास ऐड ऑन कर देती हूँ. इसी के साथ हम इमेज बॉक्स की क्लास ऐड करेंगे. यहाँ पर हम इमेज का सोर्स गेट कर लेंगे. सो इन दी एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सम पिक्चर्स हियर. आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ हम बिल्कुल आखिर में जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे दैन वी आर गोइंग टू ऐड हियर सम इमेजेस. इसी के साथ गए इस डिव से बाहर आ जाएंगे हम इमेज बॉक्स के एंड दैन वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर अनदर रो. सो हियर इज़ अनदर कॉलम. यहाँ पर हम लार्ज गेट करेंगे और यहाँ पर मैं लार्ज कॉलम को 8 दे देती हूँ. इसी के साथ साथ मैं कॉलम मीडियम 10 ले लूँगी एंड देन मार्जिन लेफ्ट बिकम ऑटो. ठीक है गाइस, इसी के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट है जो डिटेल बॉक्स. ये बहुत दफ़ा बनाया हुआ है और इसकी क्लास भी हमने बना के सेव की हुई है.
इसी के साथ साथ गाइज मैं यहाँ पर एक क्लास दूँगी जिसका नाम मैं इमेज डेट रख देती हूँ, इमेज डेट, ठीक है जी। सो हियर इज यू कैन राइट इट हियर द डेट h2 I just write here 17 January, okay, and then out from, बल्कि मैं h2 बहुत बड़ी हो जाएगी, आई एम गोना चेंज इट h6, ओके, और इन दोनों के बीच में मैं BR फॉर दी ब्रेक लाइन का ब्रेक रूलर का दे देती हूँ। और h6 के बाद डिफ के बाद यहाँ वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर h3। h3 में हम यहाँ पर जो भी ब्लॉगर्स हैं या जो भी ब्लॉग राइट डाउन करें उनके नेम यहाँ पर दे देते हैं। बॉक्स डैनियल randomly, और दैन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू जो भी ब्लॉग में उन्होंने राइट डाउन किया होगा उसको आप यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे, ठीक है जी। इसी के साथ वी आर गोइंग टू आउटसाइड फ्रॉम द पैराग्राफ एंड देन टेक हियर द एंकर टैग, और यहाँ पर फिलहाल हम कुछ नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पर वी आर गोइंग टू टेक हियर द रीड मोर लाइक दिस वन, ओके। नाउ मूव ऑन द आउटसाइड। अब सिंपल आपने इन डिफ से बाहर आना है, तो हियर इज़ 1 2 3 4 एंड 5। मैंने बहुत ध्यान से बता दिया, आपने भी यही सेम मेथड करना। अब गाइज यहाँ पर क्रिएट हियर अनदर कॉलम मीडियम 6 एंड देन पैडिंग राइट इक्वल्स टू 0, बल्कि मैं पहले कॉलम की क्लास बना लेती हूँ, ओके, एंड देन मैं इसी के साथ ही PR फॉर पैडिंग 0 इम्प्लीमेंट कर दूँगी, ठीक है जी। सो आफ्टर दैट आउटसाइड बॉक्स पर आते हैं एंड देन यहाँ पर B2, डू यू रिमेंबर हमने क्लास बनाई थी। इसी के साथ साथ अगेन image box की class, after that you can add it here the image source. If you want to take the copy from the outside on the upside तो आप वो भी ले सकते हैं, फ़िलहाल मैं इसको write down ही कर रही हूँ। Now I just close it here, okay। So div से बाहर आ जाएंगे and then create here another row। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम कॉलम लार्ज 8 ओपन करेंगे, और फिर हमने जो ऊपर किया था सेम वही प्रोसीजर्स यहाँ पर हम ओपन कर देंगे। सो कॉलम MD 10 एंड देन मार्जिन राइट इक्वल्स टू ऑटो, ओके। आप अगैन इस डिव से बाहर आ जाएं, दैन यू कैन क्रिएट हियर द डिटेल बॉक्स। और जितनी पिक्चर्स आपने लेनी है गाइस आप उतनी ही जो है वो डिव क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, ओके। इसी के साथ साथ अगैन इमेज डेट सेम प्रोसीजर एंड यू कैन टेक इट हियर अगैन H6। तो यहाँ पर 12 again implement here the BR and then March। इसी के साथ साथ H6 से बाहर आ जाएंगे आप and then you can also outside from the div and take here the H3। अब मैं यहाँ पर boxer मैथ्यू जेम्स, ठीक है जी। इसी के साथ मूव ऑन दी नेक्स्ट। फर्दर मोर यू आर गोइंग टू टेक इट हियर द पैराग्राफ अगैन एंड देन वही पैराग्राफ जो भी आप इनके बारे में कमेंट्स लेना चाहें देन यू कैन टेक इट हियर। सो पैराग्राफ से बाहर आ जाने के बाद गाइज आप सिंपल एंकर टैग ले लेंगे इसी डिव में रहते हुए। सो आई जस्ट पिक हियर एंकर टैग
एंड देन फिलहाल इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड यर सम सोर्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं. फिलहाल हम यहाँ पर रीड मोर राइट डाउन करें. ओके इसी के साथ साथ एंकर टैग को क्लोज कर देंगे. एंड अगैन वही जिस तरह से मैंने कहा था, यू कैन गो आउट फ्रॉम द डिफ. सिंपल. अब मैं यहाँ पर सारे डिफ क्लोज कर रही हूँ. आई थिंक 2 बहुत है हमारे लिए. ओके नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज इट हेयर. तो गाइस इसके बाद हम यूज़ करेंगे क्लाइंट सेक्शन. तो यहाँ मैं कमेंट पास कर देती हूँ. नेक्स्ट हमारा है क्लाइंट सेक्शन. उसके बाद सिंपल. फिर वी आर वर्किंग ऑन द फूटर. ठीक है जी. तो मूव ऑन दी CSS. तो गाइस यहाँ पर हम लोग जो है वो सिंपल एक कमेंट पास कर देते हैं फॉर द ब्लॉग व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर. सो यहाँ पर हम ब्लॉग सेक्शन को राइट डाउन कर देते. सो वी आर गोइंग टू राइट इट हियर द ब्लॉग. और फर्दर मोर आगे बढ़ते हैं. देन वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द ब्लॉग सेक्शन. सिंपल हमने बना के रखा हुआ है. फॉन्ट कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं फॉर द वाइट. और इसी के साथ साथ ओवरफ्लो ऑन द एक्स एक्सेस वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन द हेडर. ठीक है जी. फर्दर मोर वी आर गोइंग टू वर्किंग ऑन द ब्लॉग सेक्शन में हमने क्लास बनाई है बॉक्स की. और यहाँ पर सिंपल वी आर गोइंग टू टेक हियर द मार्जिन इज 45 px. आफ्टर दैट 0. इसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर. Okay, move on the next. Here is the block section and then box. इसी के साथ guys we are going to implement here the image box. After that we are working on it. The position is relative. So move on the next is a blog section, then box, and then image box. After that the image inside the box जो कि हमने लेनी है उसके बाद हम डिसाइड कर लेते हैं इट्स 100%. Okay, now move on the next. इसी के साथ साथ guys we are going to move on the another setting is a block section and then box. और इसी के साथ साथ we are going to implement here detail box. ठीक है गाइस. एंड यहाँ पर अगैन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द पोजीशन रिलेटिव. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द पैडिंग टॉप is 75 px. After that we are going to implement here the padding bottom is 35 px. Okay, move on the next. Here is another is a block section, then box, and then after that we are going to implement here the detail box again. और डू यू रिमेंबर हमने एक इमेज डेट बनाई थी, हम उसको यहाँ पर कॉल कर लेंगे. सबसे पहले हियर इज अ पोजीशन इज एब्सोल्यूट. आफ्टर दैट लेफ्ट इज 0. furthermore we are going to implement here the top again 0. So after that we are going to implement here the width is 75 px, height as well 75 px. We are going to implement here the border radius is 100%, and then text align is centered. After that we are going to implement here the background color. Implement here the background color is we are going to implement our relevant code जो कि अभी तक हम लेते हुए आ रहे थे. color become white font. इसी के साथ साथ display you know very well. So display is AppKit box again display MS flags, and after that displays flags. ठीक है गाइस. इसी के साथ साथ मूव ऑन द नेक्स्ट WebKit box pack is centered.
After that we are going to implement here ms flags pack centered, and after that we are going to implement justify content center. इसी के साथ साथ WebKit box align centered, and then ms flags align. So here is the ms flags align as well as centered, and after that we are going to implement here the align item is centered. Okay, move on the next, the WebKit transform. We are going to take care of the translate on x-axis. I think not on the x, we are going to take in the y-axis. Okay, y-axis पे गाइस हम -50% रखेंगे और सेम यही ट्रांसफॉर्म नीचे इम्प्लीमेंट कर देंगे. तो सिंपल मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लेके ट्रांसलेट ऑन y and then implement here -50%. Okay, remove another paragraph. Okay, fine. So move on the next class is block section, then box, then detail box. इसी के साथ साथ image date के अंदर we are going to create here the h6 for the heading. So margin में guys इसके फिलहाल 0 रखते हैं, otherwise we are going to implement after. तो फिर हम देख लेंगे we are going to change some things, तो हम आसानी से चीज़ों को चेंज कर लेंगे, जिसमें से हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बहुत दफ़ा किया है. So block section के बाद I am going to text here the box. After that we are going to implement here detail box. इसी के साथ साथ h3. So here is the font weighted is bold. Block section, then box, then detail box, and then anchor. इसी के साथ साथ display online block. Implement here the padding is 8px and then 25px. इसी के साथ साथ implement here the background color is black. After that we are going to implement here the border 1px solid, and then we are going to take here the transparent. इसी के साथ साथ guys implement here the border radius. So border radius is the 35px. इसी के साथ साथ color implement कर देते हैं हम white for the font color. After that margin top. So margin top is 35px. Move on the next. So move on another class. So यहाँ पर हम लेते हैं again block section, then box. Here is the detail box, and then anchor में हम hover implement कर देते हैं. So here is the background color is white. Okay, move on the next. After that we are, अच्छा इसी के साथ मैं font color भी दे देती हूँ. जब हम hover करें तो हमारा जो font color है वो black में convert हो जाएगा. ठीक है guys. Okay, move on the next. Here is the block section, and then हमने एक class बनाई थी box b1. So मैं check कर लेती हूँ क्या इशू है. So box b1. Okay, again we are going to take it here the detail box. इसके अंदर guys we are going to implement here some padding on the right.
is 35px. Okay, move on the next. Here is again block section, then box here. सो यहाँ पर B2 की क्लास हमारे पास आ गई. Let me check. B1, okay, B2. So इसी के साथ साथ we are going to take here the detail box. सेम वही मेथड है, पैडिंग राइट दी थी, अब यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट कर देंगे जो कि सेम रहेगी 35px. ठीक है गाइस, इसी के साथ साथ मूव ऑन द नेक्स्ट. So next class we are going to implement here again the block section. After that box B2. Then we are going to implement here some hover. So B2 के बाद again we are going to take here the detail box. Here is the detail box and then image delete. Implement here on the left side is 35px. So picture implement करेंगे and then we are going to share the final result. फिर हम बनाएंगे client section और फिर हमारे पास एक या दो section रहेंगे. फिर आज हम इसका last section complete करेंगे and then we are going to share with you the final result. So guys, यहाँ पर हम एक official website हमने login किया और यहाँ से हम कुछ pictures के link source get करेंगे जो कि हमें required है. Like this one, copy image link and then back on the HTML. So यहाँ पर हम अपनी पहली पिक्चर को मार्क करते हैं. सेम लाइक दैट, इस तरह से बहुत दफ़ा बताया हाउ टू कॉपी CDN. सो आप लोगों को पता होगा. इसी के साथ साथ मूव ऑन अनदर इमेज. आई थिंक दिस वन इज़ नाइस. यहाँ से अगेन कॉपी इमेज लिंक करते हैं दैन बैक ऑन आवर वर्क और हम जहाँ पर सेकेंड इमेज रिक्वायर्ड है वहाँ ले जाके उसको पेस्ट कर देते हैं. सो ये हमारा ब्लॉक सेक्शन कंप्लीट हो गया. इसको रन करा के आपको चेक कराते हैं दैन फिर हम बढ़ते हैं अपने क्लाइंट सेक्शन की साइड पे. सो यहाँ तक हमारी वेबसाइट चल रही थी और एवरीथिंग इज़ ऑन वर्किंग, आप देख सकते हैं. इसी के साथ साथ अबाउट था, क्लासेस के अंदर हमने जो है वो स्लाइडर्स बनाए थे. इफ़ यू वांट टू टेक तो आप आसानी से और स्लाइडर्स ऐड कर सकते हैं. इसी के साथ साथ लेटेस्ट ब्लॉग का एरिया आपके सामने बन चुका है, आप देख सकते हैं. और ये डेट्स के साथ सिंपल हमने कुछ टैग्स यहाँ पर ऐड ऑन किया है. तो इसके लेफ़्ट पर और उसके राइट पर अगर आप चाहें तो दोनों को इक्वली एडजस्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने खुद इसके लेफ़्ट और इसके राइट के ऊपर टैग्स को दिया है. सो मूव ऑन दी अनदर सेक्शन इज़ अ क्लाइंट सेक्शन. अब हम बढ़ते हैं अपने क्लाइंट सेक्शन की साइड पे एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर क्लाइंट सेक्शन. सो okay, here is the client section R. So move on the again create here some sections. Okay, so move on the another. So furthermore यहाँ पर class create कर देते हैं. It's a client section. Okay, इसी के साथ साथ we are going to add here the layout padding. आई थिंक हम यहाँ पर लेआउट पैडिंग बॉटम यूज़ कर लेते हैं. इसी के साथ नीचे आते हैं एंड देन क्रिएट हियर द कंटेनर फ्लोट. सो वी आर गोइंग टू टेक इट हियर कंटेनर फ्लोट. इसी के साथ साथ क्रिएट हियर द रो एंड देन क्रिएट हियर कॉलम मीडियम 10. और इसी के अंदर वी आर गोइंग टू टेक इट हेयर द कॉलम लार्ज 8. सो मैं इसको मैं आई थिंक इसको मार्जिन ऑन एक्स एक्सेस इसको ऑटो कर देती हूँ. ठीक है गाइस, इसी के साथ हम यहाँ पर क्लाइंट कंटेनर ले लेंगे. क्लाइंट कंटेनर. इसी के साथ साथ अगेन वी आर गोइंग टू टेक इट हियर द हेडिंग
heading container. After that we are going to take it here the h2. So implement here हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कहते हैं, pods are students feedback. What are trainers? ये अच्छा लगेगा. Okay, feedbacks. So client के सेक्शन के अंदर नॉर्मली आप responses जो है वो गेट करते हैं. Okay, इसी के साथ साथ implement go outside from the paragraph and then div. So here is another name is the client box and then container. Enter this class again, the carousel wrap. If we are going to take here the carousel, उसमें हमने पहले भी दिया था. Here is the oval carousel. तो सेटिंग आपने की भी है ऑलरेडी, बस सिंपल आप उसको कॉल करा देंगे. Here is the item. After that you can take it here the box, then again image box, and then you can take it here the image source, and then implement here the alter tags. पिक्चर हम इन दी एंड में गेट कर देंगे, इसी के साथ इस डिव से बाहर आ जाएंगे. एंड देन यू कैन टेक इट हियर द डिटेल बॉक्स क्लास. सेम प्रोसीजर है गाइस, सिमिलर जो कि मैंने लास्ट लेक्चर्स पे आप लोगों को क्लियर करवाए. सो डिटेल बॉक्स, इसी के अंदर टेक हियर द h2, बल्कि h4 ले लेते हैं. सो जॉन Mac. Okay, so again he says something, so implement here the paragraph and implement here the lorem ipsum. कुछ भी कमेंट्स करना चाहें तो आप इजीली यहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं. तो यहाँ पर मुझे कोटेशंस की पिक्चर लेनी होगी. तो यहाँ पर मैंने इमेजेस के फोल्डर के अंदर कोटेशन का एक जिप PNG फाइल डाउनलोड की हुई है. इफ़ यू वांट टू ऐड ऑन, आप भी इंटरनेट से इजीली गेट कर सकते हैं. तो आई क्लोज दिस हेयर. इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू बैक ऑन 3 divs. इसी के साथ अगैन अब फिर वही आइटम से आप कॉपी कर लें और दैन फर्दरमोर आप इसको पेस्ट कर दें. तो अगैन मैं यहाँ से 3 से लेकर आइटम तक कॉपी करूँगी इसको. सो हेयर इज़ आवर आइटम. वी आर गोइंग टू सी. ओके, बहुत आगे चले गए थे हम. तो बैक पर आते हैं स्लाइडली सा. हियर इज़ आवर आइटम. जितनी भी आपको स्लाइडर्स रिक्वायर्ड उतनी आप कॉपी पेस्ट कर जितने आप पिक्चर्स गेट करना चाहते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ हेयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. सो यहाँ तक गाइस हमने कुछ पिक्चर्स गेट कर ली कोटेशंस की. इफ़ यू वांट टू गिव मोर देन तो आप फर्दर में कॉपी कर सकते हैं. सो यहाँ पर गाइस वी आर गोइंग टू पास हियर सम कमेंट्स अबाउट द क्लाइंट. हम क्लाइंट बनाते हैं, सिंपल बैक करते हैं और सिंपल यहाँ पर सबसे पहले क्लास ओपन करते हैं क्लाइंट सेक्शन की. इसमें ऑब्वियसली कलर हम वाइट रख देंगे. ठीक है जी. तो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द फॉन्ट कलर इट्स वाइट. Okay, move on the next. Here is the client section and then heading container. So here is the WebKit box. WebKit box align is centered. इसी के साथ MS Flex align is centered, but the direction flex align centered.
After that here is a line item set. इसी के साथ साथ we are going to implement here the text align, and last on the list is a margin bottom. It's 45 px. So here is the client section, and after that we are going to implement here the heading, we are going to take here the box. So display WebKit box, again display MS flags box, again display is flags, not the block. Here is flags. Move on the next. So WebKit box orient, WebKit box orient, we are going to take it here to vertical. इसी के साथ साथ if you required guys the source code आप comment में बता सकते हैं. We also provide you. So box direction, so box direction we are going to take it here in a normal, and after that MS flags direction, here is the column, and again the flags direction, again column. Here is the WebKit box align centered, MS flags align, and last on the list is an align item. Centered. Okay, move on the next. Take it here the margin 0 and 10 px. Move on the next. Here is the client section. So after that we are going to take it here the box and then image box. So जो pictures हमने ली है उसका पहले box decide कर लेते हैं. Width is 1 to 5 px. After that implement here the border radius is 100%. After that the margin bottom, we are going to take it minus 62 px. Position is relative, and after that we are going to implement here the z index is 2. So move on the next is a client section के अंदर जो पिक्चर लेनी है सिंपल वो हम उसको 100% ही रखेंगे. So client section and then box, we are going to take it here the box. इसी के साथ साथ image box and then image. So after that here is the width, it's 100%. So next here is client section, box, then detail box. Now you can implement here some display WebKit box, and again display his MS flags box, and then again display is flags. Move on the next. Here is take care the WebKit box orient. So WebKit box orient is a vertical. After that WebKit box direction, WebKit box direction is a normal. Again MS flags direction is column, and then again implement here the flags direction as well as column. ये सारी सेटिंग्स गाइस वही है जो हम बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, और ये सब सेटिंग सिमिलर है. आपको जब भी अलाइन करना है यू कैन इम्प्लीमेंट हेयर ऑन दी 3 कैटेगरीज जिस तरह से हम कर रहे हैं.
So ms flex align centered, and then implement here align item centered. So here is the padding. It's 95px, then 25px, 45px, and again 25px. इसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं गाइज. So 050. Okay, here is the blackish. इसी के साथ साथ move on the next. Line section, then box, then detail box, and then h4. So here is the font weighted को हम कर देते हैं bold. After that move on the next. So client section. अब हम आते हैं इस पैराग्राफ के ऊपर. सो सेम क्लास को कॉल करेंगे एंड देन एच की जगह पे पैराग्राफ राइट डाउन कर देंगे. मार्जिन टॉप रखना चाहती हूँ हेडिंग से. आई थिंक 25px इट्स ओके. सो मूव ऑन द नेक्स्ट. इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द क्लाइंट सेक्शन, देन box, then detail box, and then image. इसी के साथ साथ we are going to implement here the width is 35px, and implement here the margin top is 25px. After that we are going to take here some carousels working. So here is client section पर आ जाती हूँ again मैं. क्लाइंट सेक्शन, दैन ओवल कैरोसेल. मुझे यहाँ पर भी वही कैरोसेल चाहिए जो कि मैंने ऊपर दिया है. ओवल कैरोसेल एंड दैन ओवल नैव. क्योंकि क्लास पहले बनी हुई थी डिस्प्ले वेबकिट बॉक्स. अगेन डिस्प्ले हियर इज. सो पहले मैं okay, display is ms flex box, and again display online बल्कि flex ले लेते हैं. ठीक है. इसी के साथ साथ again webkit box pack. centered, and again ms flex pack centered, and then justify content as well as centered. After that implement here some paddings. सेम वही है जो कि हमने पहले भी दिया था 0 and 10px. After that we are going to implement here the margin top is 55px. Move on the next. Here is the client section again. So client section. So here is another oval nav, and then we are going to create here oval previous. इसी के साथ next को copy कर लेंगे. Here is the client section, then oval carousel, then oval nav, so here is the oval nav, and then oval next. So again we are going to अच्छा थोड़ी सी change होगी क्योंकि सेम क्लास आप implement नहीं कर सकते. So height is 50px. After that opacity is 1,
इसी के साथ साथ बैकग्राउंड रिपीट इज़ नॉट रिपीट। अच्छा, सवाल ये आ सकता है कि जो कि हमने ऊपर कैरोसेल में दिया है तो सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पर भी कॉल किया, तो क्या ये पोजीशन मिसमैच नहीं होगी? रीज़न इज़ दैट क्योंकि हमने क्लाइंट सेक्शन को मेंशन कर दिया, दैट्स वाई। ठीक है जी, अगर आप क्लाइंट सेक्शन को मेंशन कर देते हैं तो फिर वो उसी रेलिवेंट सर्टेन क्राइटेरिया के अंदर काम करता है। सो बैकग्राउंड साइज़ अगर आप नहीं करते और अगर आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करते तो फिर बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाता है दोनों आपस के अंदर कैरोसेल्स। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर सेक्शन प्रोवाइड किए हैं और बाकायदा उसके नाम मेंशन किए, तो वो उसी सर्टेन क्राइटेरिया के अंदर ही वर्क करेगा जिसके अंदर आपके रिक्वायरमेंट है। मूव ऑन द नेक्स्ट। हियर इज अगेन द क्लाइंट सेक्शन। So again, so here is oval carousel and oval nav, and then oval is previous. Okay, सबसे पहले हम implement here the background image, जिसका URL हम provide कर देते हैं। images previous arrow in png, ठीक है जी। move on the next। इसी के साथ साथ background color become white, so WebKit transform, so translate on x-axis is we are going to tan here -10 px। सेम इसी को कॉपी कर लेंगे एंड देन इम्प्लीमेंट हेयर ऑन दी। अवल के काम करते हैं, इसको +10 कर देते हैं, ठीक है। अगेन ट्रांसफॉर्म, सो ट्रांसलेट ऑन एक्स एक्सेस एंड देन 10 px। इसको पॉजिटिव रखते हैं एंड देन नेक्स्ट को हम लोग जो है वो माइनस रख देंगे। तो सिंपल, मैं कुछ नहीं करूँगी, इसी को कॉपी कर लेती हूँ, नीचे पेस्ट कर देती हूँ और देन जहाँ पर प्रीवियस लिया है वहाँ नेक्स्ट कर देंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर भी हम नेक्स्ट एरो ले लेते हैं और प्लस में था तो यहाँ पर इसको हम माइनस में कर देंगे। बस कुछ नहीं करना, कलर चेंज कर देते हैं। प्रीवियस वाला जो है इसको ब्लैक कर देती हूँ, ठीक है जी। और जो नेक्स्ट वाला है वो वाइट हो जाएगा। दोनों में पोजीशनिंग चेंज हो गई है और दोनों प्लस और माइनस के अंदर हमने डिफरेंशिएट प्रोवाइड कर दिया है। सो पिक्चर इम्प्लीमेंट करते हैं, दैन वी आर गोइंग टू शेयर द फाइनल रिजल्ट। सो आ जाते हैं अपनी पिक्चर्स पे। सो यहाँ पर आकर यहाँ पर हमें पिक्चर लेनी है, हम पिक्चर्स गेट करते हैं। सो पिक्चर्स गेट करते हैं, यहाँ से कुछ पिक्चर्स हम कॉपी कर लेते हैं गाइस रैंडमली। सो कॉपी इमेज लिंक, रिजल्ट देख। सो गाइस वन बाय वन हम पिक्चर्स के यूआरएल कॉपी करते रहेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट सिंपल कॉपी इमेज लिंक। और बस वन बाय वन जितनी भी आपने पिक्चर्स ली हैं आप अपने हिसाब से उनको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर जस्ट लिंक पेस्ट कर रही हूँ। अब आप स्क्वायर में लेना चाहें, सर्कल में लेना चाहें, डिपेंड ऑन यू। फ़िलहाल हमने एक नए मेथड से लिया है स्क्वायर के अंदर। सो जल्दी से हम यहाँ से कॉपी इमेज लिंक कर लेते हैं, दैन वी आर गोइंग टू पेस्ट इट द सर्टेन एरियाज। इसके साथ आप जितनी भी बनाना चाहें आप सिंपल कॉपी पेस्ट करें, यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल टाइम। तो यहाँ पर हम last on the list copy image link, then paste it here। so guys नेम टैग्स वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज कर दीजिएगा। आप सिंपल इसको रन करा के शेयर करते हैं, नाउ लुक लाइक दैट। ओके जी, ये आपका स्लाइडर्स आ गए, ये देखें। अभी यहाँ पर पिक्चर की हाइट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर दीजिएगा। मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ क्योंकि मैंने पिक्चर सारी लैंडस्केप में ली है। ये एक पोर्ट्रेट में आ रही है,
copy image link. Okay, third one, we are going to check it. One, two, and we are gonna change this image. ये मैंने बाय मिस्टेक है इसको हाइट में ले लिया था, दैट्स इक्वल लेंथ चाहिए सबकी, एडजस्टेबल चाहिए, दैट्स वाई मैंने इनको, ये सही नहीं हुई। वन, लेट मी चेक कि कौन सी पिक्चर है, चेक कर लेने वाले, देन फिर उसी को ही चेंज कर देंगे। ओके, मैंने पिक्चर को वापस कर दिया है बाय प्रेसिंग कंट्रोल Z। अब मैं चेक कर लेती हूँ पहले पिक्चर कौन सी है। बाय प्रेसिंग कंट्रोल आप लिंक के ज़रिए चेक कर सकते हैं, इसको पे क्लिक करके ये पिक्चर कौन सी है, आसानी से खुल जाएगी ये पिक्चर। एंड दैन फिर आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई कौन सी पिक्चर है जो कि आपके पास लिंक में शो नहीं हो रही। ओके, सो यहाँ पर आई थिंक मुझे यही लग रही है कि इसके आगे पोर्ट्रेट लिखा हुआ है, चेक कर लेते हैं फाइनल। सो ओके फाइन, ठीक है गाइस। अभी देखिए आप बिल्कुल अलाइनमेंट के ऊपर है क्योंकि पिक्चर हमारी लैंडस्केप के बदले पोर्ट्रेट में आ गई थी। ठीक है गाइस, यहाँ तक हमारा क्लाइंट का फीडबैक भी कंप्लीट हो गया और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी वेबसाइट आपको दिख रही होगी। लास्ट वन द लीज हम फूचर क्रिएट करते हैं, दैन कॉन्टैक्ट दोनों को एक साथ ही डिज़ाइन करेंगे। सो बैक ऑन आर VS कोड। सो पार्ट 2 के अंदर गाइज हम आज इस वेबसाइट को कंप्लीट कर देंगे। इफ़ यू रिक्वायर द सोर्स कोड आप कमेंट में बता सकते हैं हमें, वी ऑल्सो प्रोवाइड यू। सो हियर इज़ बैक ऑन द लास्ट सेक्शन आर, इसी के अंदर हम 2 सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। सो हियर इज़ आर इन्फो सेक्शन, जिसमें मैं फूटर और कॉन्टैक्ट को गेट कर दूँगी। ठीक है जी, सो लेट्स बिगिन। सो मूव ऑन हेयर द इन्फो सेक्शन, और यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट हेयर द अगैन। सो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक क्लास बना लेती हूँ सेक्शन के बगैर, इन्फो सेक्शन की। ओके, इसी क्लास के अंदर गाइस वी आर गोइंग टू क्रिएट द कंटेनर फ्लोट। ओके, इसी सेक्शन के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट हेयर द रो। सेक्शन तो गाइस हमने बनाया ही नहीं है फ़िलहाल। कॉलम मीडियम मैं यहाँ पर 10 रख देती हूँ, और इसी के साथ साथ मैं मीडियम मार्जिन लेफ्ट इज ऑटो। इसी के अंदर गाइस वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर अनदर रो, और इस रो के अंदर हम सिंपल एक और क्लास बना लेते हैं, इन्फो मैन रो की। ठीक है, इस डिफ को नीचे ले जाते हैं, एंड देन यू कैन क्रिएट हियर अगैन द कॉलम मीडियम 6 क्लास, और इस क्लास के अंदर भी आप पैडिंग राइट 0 कर दें। ठीक है, इसको नीचे ले जाओ। इसी के अंदर ही गाइस हम एक सेक्शन क्रिएट कर देंगे जो कि हमारा कॉन्टैक्ट का सेक्शन होगा। मैं यहाँ कमेंट पास कर देती हूँ ताकि इफ़ यू वांट टू गिव सम चेंजेस तो आप यहाँ के चेंजेस इम्प्लीमेंट कर सकें। सो अब यहाँ पर सेक्शन बना देते हैं, और इस सेक्शन के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द क्लास जो कि हमारी है कॉन्टैक्ट सेक्शन। आई नो बहुत सारी क्लासेस हैं क्योंकि कंप्लीट वेब पेज है। सो हमारा जो मेथड है वो कम्प्लीटली आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड करने का है। सो रिक्वेस्ट कॉल बैक। So after h2 we are going to take here the form. So form action में कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे बाहर आ जाते हैं सिंपल।
कुछ डिव्स के अंदर ही ऐड करूँगी इसको, सिंपल डिव्स में। ओके, तो जो भी इनपुट लेंगे वी आर गोइंग टू टेक इन अ डिव, टाइप tags, so here is a placeholder is name. Now you can close it here. इसी के साथ again इस div से बाहर आ जाते हैं, create another div, और इस div के अंदर again you can take it here, the input, type, text, so placeholder, here is the phone number, here is phone number. So now close it here. इसी के साथ आप इस div से again बाहर आ जाएंगे and then create another div. Sorry, I close the caps lock. और इस div के अंदर you can get here again input, type, email, and again placeholder, email. Okay, move on the next. इसी के बाद again guys you can take it here another div. जितने भी आपको फॉर्म की फील्ड्स क्रिएट करनी होंगी आप सिंपल यू कैन मेक डिफरेंट डिव्स, और आप उन डिव्स के अंदर इन फील्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं. सो इनपुट, टाइप, टैग्स, एंड देन प्लेस होल्डर, मैसेज बॉक्स. अब यहाँ पर आप टेक्स्ट एरिया लेना चाहें सो डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है. सो मैं बल्कि इसको सिर्फ मैसेज कर देती हूँ और इसकी क्लास क्रिएट कर देती हूँ जिसकी विड्थ वगैरह मुझे चेक करनी होगी. तो यहाँ पर मैं इसको मैसेज बॉक्स की क्लास होल्ड कर देती हूँ. ठीक है, नाउ आई क्लोज दिस हेयर. इसी के साथ इस डिव से अगेन बाहर आ जाएंगे एंड देन यू कैन टेक इट हियर अनदर डिव, डी फ्लैक्स. ओके, सो इसी के अंदर बटन में आप सेंड मेंशन कर दें एंड देन यू कैन आउट फ्रॉम द div and then also back the form. ठीक है जी. इसी के साथ guys we are going to create here the, if you want to provide some map तो आप यहाँ पर map भी दे सकते हैं. तब यहाँ पर हम map create कर लेते हैं. so मर्जी है देना चाहें दे, it's not a compulsory. so बल्कि मैं क्लास ना लेती हूँ map container के नाम से. here is a map container. so we added this. map container. so इसी के अंदर we are going to create here the map class and then you can take it here the Google map. so यहाँ पर गूगल मैप के अंदर गाइस मैं स्टाइल्स क्रिएट कर देती हूँ. here is the width is 100 px. okay, इसी के साथ implement here the height. px. okay, now you can close it here. so back on the section. अब इस सेक्शन से अगेन बाहर आएंगे और यहाँ पर आप मार्क कर दें फ़िलहाल यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट जो है वो एंड हो गया. अभी इन्फो कंटिन्यू है. ठीक है, एंड ऑफ कॉन्टैक्ट्स. इफ़ यू रिमेंबर तो आसानी रहेगी. तो यहाँ पर मैं इसको फूटर स्टार्ट कर देती हूँ. so here is the footer began.
ठीक है जी, उसी के अंदर ही चल रहा है, सेम लाइक दैट। ओके, थोड़ा सा इसको भी एडजस्ट कर देते हैं। सो यहाँ से इंटर करेंगे एंड देन इम्प्लीमेंट हियर दिस सेक्शन। सेक्शन के बाद यू कैन क्रिएट हियर द क्लास। So here is the footer section. Okay, अभी सेक्शन को नीचे लेके चले जाएंगे गाइस। यू कैन क्रिएट हियर द सोशल बॉक्स क्लास। रिमेंबर होगा बहुत सारे लोगों को जिन्होंने क्लासेस देखी हैं सोशल बॉक्स में, हमेशा हम लोग एंकर क्लासेस में सोशल मीडिया आइकन्स ऐड कर लेते हैं। इफ़ यू हैव पिक्चर्स, आप इमेजेस सोर्स कर सकते हैं। हमने अपने पास लेके रखी हुई हैं, सो मैं डायरेक्ट ही कॉल कर लेती हूँ। इमेजेस, फेसबुक PNG, ऑल्टर टैग्स। आप चाहें तो इंटरनेट से डायरेक्टली भी कॉपी कर सकते हैं। इसी के साथ यू कैन क्रिएट अनदर एंकर अगैन। अच्छा, मैं इसको नहीं क्रिएट कर दी, ऊपर का कोड जो है उसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। भी सोशल मीडिया आइकन गेट करने आपने, हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं। ओके, बस सिंपल, कुछ ख़ास नहीं, सेम वही रखेंगे। बस जो पिक्चर्स है वो ऑटोमेटिकली आप कॉल करते रहेंगे। चलो, इट्स ओके। लिंक्डइन, इसी के साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर इंस्टा and then last on the list is a YouTube. Okay, after that we are going to back here some paragraphs. So paragraph के अंदर सिंपल, आपको याद होगा हम कॉपीराइट का मार्क गेट करते हैं। कॉपी 125, all right reserved, designed by me. ओके, सो इसी के साथ ओके फाइन, वी नेवर नीड एनी एंकर टैग फ़िलहाल। सो पैराग्राफ फिर क्लोज, सेक्शन यहाँ क्लोज हो गया। इसी के साथ साथ मुझे बाहर आना पड़ेगा और डिफ हमारे पास हमने क्रिएट किए हुए थे, इसमें हम कुछ क्लासेस बना लेंगे और एक डिफ से बाहर आते हैं गाइस फूटर के बाद। सो यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट करूँगी जो कि है कॉलम मीडियम 6 की, और इसके अंदर मैं पैडिंग ऑन एक्स एक्सेस इज 0। ओके, इसी डिफ के अंदर मैं एक इमेज बॉक्स ऐड कर लूँगी। सो इमेज बॉक्स की क्लास बना ली है और इसी के अंदर गाइस आई एम गोना टेक इट हियर इमेज सोर्स के अंदर हम एक पिक्चर गेट कर लेते हैं। so, मैंने एक पिक्चर गेट कर ली और यहाँ पर सो वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर वेबसाइट। completely close here, so div चेक कर लें। ओके, सो यहाँ तक एंड हो जाता है गाइस हमारा। अब हम आते हैं अपने CSS पे और फाइनल इसको टच देता है, और जहाँ जहाँ हमें इमेज रिक्वायर्ड थी, खैर फिलहाल हमने वो डायरेक्टली दे दी है। सो हियर इज वी आर गोइंग टू पास हियर कमेंट। इन्फो, अब इन्फो में हमने दोनों ही बना दिए हैं, बस हम डायरेक्टली इसको वर्किंग पे लेते जाएंगे। सबसे पहले इन्फो सेक्शन है। सो इन्फो सेक्शन में सबसे पहले गाइस वेबकिट बॉक्स,
किट बॉक्स अलाइन एंड इसी के साथ MS फ्लैग्स अलाइन and after that we are going to implement here the line item flags and move on the next. Here is the info section and then contact section, दोनों को मैं एक साथ ही कॉल करेंगे. सेम प्रॉपर्टी है, पोजीशन इज दोनों के रिलेटिव है, दैट्स वाई. इसी के साथ साथ मूव ऑन द नेक्स्ट info section and then contact section and H2. So here is the font, weight it is bold. Okay, after that we are going to implement here another info section and then contact section में हमने फॉर्म लिया है. So here is the margin top is 45 px. After that padding right is 35 px and then margin bottom is again 45 px. Move on the next. Here is the info section again. So ये हमारा लास्ट ही क्राइटेरिया. फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम नेक्स्ट टॉपिक किस पे लेकर आएंगे, जिस पे हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे. सो हियर इज द विड्थ. आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट हियर द बॉर्डर इज नन. इसी के साथ साथ गाइस वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द हाइट इज 50 px. जितने भी इनपुट हैं उसकी हाइट. So implement here the margin bottom 25 px among all. So padding left 25 px. After that implement here the background color is black and then outline is none and then font color is become white and then implement here the border radius is 45 px. Okay, move on the next. Here is another info section. After that contact section. After that input. Say where is the WebKit input placeholder like this one. ये सूडो क्लास आपने राइट डाउन करनी है इनपुट के बाद. ठीक है जी. You can call it here. So here is the color. We are going to implement okay. Again सेम क्लास रहेगी. अब MS फ्लैग्स के ऊपर आपने इसको कॉपी करना है. So info section input then MS input placeholder. ठीक है जी. Now again implement here the color जो कि हमने ऊपर प्रोवाइड किया है. This one. Okay, move on the next. Here another. इसको कॉपी कर लेते हैं. Here is a pseudo class. Okay. So color और कॉम्बिनेशन सेम रहेगा. इसी के साथ again info ऐसी कोई कॉपी कर लेती हूँ, ज़्यादा बेटर है. बस थोड़ी सी इसमें जो है वो सेटिंग करनी होगी. सिंपल इनपुट के बाद जस्ट प्लेस होल्डर की सूडो क्लास है. ठीक है जी. सो वी आर गोइंग टू चेक इट हेयर. ओके फाइन. अदरवाइज कलर वही रहेगा जो कि है. मूव ऑन दी अनदर
info section, then contact section, then input dot message box. So here is the implement here the height, क्योंकि हमने उसका मैसेज बॉक्स की हाइट अलग ही रखी थी 135 px, and implement here the border radius for corners को थोड़ा सा रेडियस में लेकर आएंगे 25 px, ताकि वो एक मैसेज बॉक्स की तरह बिहेव करे. Move on the next. Here is the info section, then contact section में हमने यहाँ पर बटन क्रिएट किया. So implement here the border is none. After that, display align block. So implement here the padding is 12 px, then 55 px. After that, implement here the background color is become white, and then implement here the border 1 px solid, and then transparent. So border radius is 35 px, and then font color हम कर देते हैं इसका black. So implement here the margin top is 35 px. After that, we are going to take another info class. So info section, and then again contact section. So button, and then over. So background color black कर देते हैं. When you take your mouse, and the font color हम इसका white कर देते हैं on the opposite. ठीक है जी, like this one. जब माउस लेके जाएंगे तब ये इम्प्लीमेंट होगा. ठीक है जी. मूव ऑन द info section, and contact section, then map container. इसी के साथ साथ implement here the height is 100%, and then minimum height हम रख देते हैं इसकी 3 to 5 px. Move on the next. अच्छा, ये भी डिपेंड करता है. इफ़ यू वांट टू गिव तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इज़ नॉट अ मैंडेटरी कि आप मैप दें. हमने लास्ट अपनी वेबसाइट में नहीं दिया था, तो इसलिए हम यहाँ पर दे रहे हैं. मैप रिस्पॉन्सिव, ये क्लास हम जावास्क्रिप्ट में बना लेंगे अभी. ओके. फाइन. इसी के साथ अगेन info section, then image box, then image width is 100%, जो कि अभी तक हम लेते आए हैं. सो लास्ट ऑन द लीस्ट फूटर पर आते हैं गाइस. सो हियर इज बिगिन दी footer. So where is the footer section again? So here is the margin is 25 px, and then 0. Move on the next. Here is the footer section, and then social box जो हमने बनाया था social media icons का. So display WebKit box, and again display MS flags box. इसी के साथ साथ display online. Okay. Inline नहीं बल्कि मैं इसको सॉरी flags ही रखूँगी. Okay. Move on the next. So WebKit box align centered. After that, here is the MS
likes align as well as centered, and as well as last one they need align item centered. ठीक है जी, move on the next is the footer section. Then social boxes के अंदर we are going to create the anchor tag. So we are going to take here the margin right on 15px. After that, here is the footer section, then social box anchor and image. Here is the maximum width is 25, and then maximum height as well as 25px. Okay, move on the next. Here is the footer. Footer section on the paragraph. So margin is 0, and then implement here the margin top is 25px. After that, you can implement here the color. Okay, font color is okay, implement here look like that. इसी के साथ last class is the footer section and anchor. The same the font color again. तो हम अभी जो है वो implement किया है. Here is okay, fine. So guys, final result देखते हैं इसका, और स्क्रिप्ट को थोड़ा सा एडिट करते हैं मैप के. तो यहाँ पर जिस गूगल मैप का हमें जो एक स्क्रिप्ट राइट डाउन करना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो ऑटोमेटिकली इंडिकेट हो जाए. तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इट हियर. तो यहाँ पर आपको याद रहे हम यहाँ पर गूगल मैप का स्क्रिप्ट ऐड करेंगे. चलो ठीक है, थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं है तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर देती हूँ जिसका नाम मैं माई मैप रख देती हूँ. छोटा सा फंक्शन है, सिंपल. So variable map prop equals to implement here centered new google dot maps डॉट जिस भी पोजीशन को लिखना है उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपने यहाँ पर राइट डाउन करने होते हैं. सो वो पोजीशन फिर आपके पास गेट हो जाती है. सो जो भी पोजीशन है, फिलहाल हम यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हैं, आप वॉट एवर जो भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपका मैप प्रोवाइड करता है डिपेंड ऑन योर लोकेशन, क्योंकि गूगल मैप में आ रही होती है. अदरवाइज़ आप चाहें तो डायरेक्टली गूगल मैप का मैप उठा कर भी, क्योंकि हमें अपनी पोजीशन का चाहिए, दैट्स वाई हम उसको गेट करेंगे जो कि रैंडमली है. Here is comma, and we are going to take it here the zoom 1/8. Okay, so go outside from here, variable map equals to new google dot maps dot map. So here is the document dot get element by id, और यहाँ पर we are going to call it here the google map. google map. It's look like that. You can implement here comma, get the down. So after that map prop close. So यहाँ पर गूगल मैप का जो स्क्रिप्ट था वो हमने राइट डाउन कर दिया. सो गाइस फाइनल रिजल्ट को गो थ्रू करते हैं और देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या कह रहा है. और हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर मैप वगैरह हमने एडिट कर दिया था आपके सामने यूजिंग अ स्क्रिप्ट.
So here is the final result of our boxer website and it's a very interesting and amazing, आप देख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव वे है. ईच एंड एवरीथिंग इज़ ऑन वर्किंग. सो एवरीथिंग इज़ ऑन वर्किंग. जितने भी कैरोसेल्स थे, जितने भी स्लाइडर्स थे, दे ऑल आर वर्किंग इन अ वे इफेक्टिव वे के अंदर. हर चीज़ रिस्पॉन्सिव है और एवरीथिंग इज़ ऑन वर्किंग बैक एंड फ्रंट, आप देख सकते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर हमने जो होवर इफेक्ट दिया है. इसी के साथ साथ यहाँ पर आप नीचे आ जाओ, यहाँ पर कंप्लीट आपका मैप भी यहाँ पर शो हो रहा है और आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए और आप इसको फुल स्क्रीन पे भी लेके जा सकते हैं. सो आई होप गाइस आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा. लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा. वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.